Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Munawar Ali Mari, your SST teacher for class 7. Dear students, in our previous classes, we started the new chapter Islam in Southeast Asia, and we learnt in this chapter that the Islam entered in Southeast Asia through the business through, activities and through the trade activities. The Arabs traders brought the Islamic concept from from the Arabia and to the regions of the Southeast Asia and the Malaysia and the Indonesia. Therefore, they are created the large number of Muslim communities there, and the different non-Muslim communities of Malaysia, Indonesia, and the inhabitants of the India, they due to the peaceful and very sustainable, lovable principles and laws and rules of Islam, they accepted Islam and had converted to be Muslims. So during the period of 15 to 1800, the Islamic activities started, and in Mughal period, the Islamic activities uh, started. They got quick. Being spreading in the regions of Southeast Asia. So today, as we also learnt and studied that the Indonesian Muslim community recorded 2 to 2.8 million in 2007, जो है एक बड़ा जो है उस वक्त पॉपुलेशन अवामुन्नास के हिसाब से रिकॉर्ड किया गया था, और ये भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडिया के जो रीजन्स हैं साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पर इस्लाम के फैलाव का जो एक बुनियादी जो मरकज़ जो था वो सूफ़ीज़ थे। सूफ़ीज़ का एक जो है वो बड़ा वो था। ठीक है, तो इट वॉज अवर प्रीवियस lecture. Today we are going to start from the another 53 page. Okay, so in this page we will learn, we will study about the different cultures and customs and traditions that the Muslims brought from the Arabia to the regions of the Southeast Asia in from 7th century till to their empowerment. So the Muslims came as merchants. They settled in the Philippines, and Islam spread to some of islands. When the Spanish conquered the Philippines in the late 16th century, they imposed Roman Catholic Christian religion on most of the people today. Muslims represent only about 5% of the पॉपुलेशन। जहाँ तक एक मज़हबी अक़ीदे का सवाल है, मज़हबी फैलाव का सवाल है, तो जहाँ तक सूफ़ीज़ का ताल्लुक़ है, तो सूफ़ीज़ का इस्लाम के फैलने में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार और रोल है। जहाँ तक जो है वो इस मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडिया के जो रीजन्स हैं, जो खित्ते हैं, जो इलाके, उनका वास्ता है, तो वहाँ पर जो है जो इस्लामिक सूफ़ीज़म जो थी, सूफ़ीज़ जो थे, उन्होंने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस्लाम की जो है स्प्रेड में, इस्लाम की डेवलपमेंट में और इस्लाम की जो है वो बढ़ताव में। इस्लाम ने किस तरह लोगों के वहाँ के उस वक़्त के नॉन मुस्लिम्स जो कम्युनिटीज़ थी, जो लोग थे, उनके ऊपर किस तरह इम्पैक्ट किया, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इस्लाम वाज अ वेरी लवेबल एंड पीसफुल एंड cultured and civilized religion. It has great very good principles. So when it came to regions of the Southeast Asia, its culture, it's very good culture, it's very good and excellent customs and the traditions impacted the non-Muslims in order to convert into the Muslims. So in such conditions, the different the Buddhism groups, peoples, the different non-community Muslims of the Malaysia, Indonesia, and the India, they had converted into the Islam, and
and finally they there the in such regions the Islamic perception اور اسلام کا جو پھیلاؤ، اسلام کی ایک سماجی اور اسلام کی جو ہے سماجی پھیلاؤ جو ہے اور ایک روحانی پھیلاؤ جو ہے وہ ہر عام طبقے کے لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کرنا شروع کر دیا تھا. تو آج تک ہم نے جو اسٹڈی کیا ہوا ہے یہاں سے لے کر اور یہاں تک جو ہے وہ اسٹڈی کی ہوئی ہے. آپ جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے ہاؤ ایور سے لے کر پاپولیشن تک اس کی آپ ڈائری ورک ہے، آپ کے لیے ڈائری ورک ہے کہ اس کو آپ اپنی پیراگراف لکھ کر گروپ میں سینڈ کریں گے. سو وش یو بیسٹ آف لک. ہیو اے نائس